कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि वल अंबिया माहिज़ ज़ुनूबि वल ख़ता मंबइल जूदि वल करमि वल अता व अला आलिही व अस्हाबिही बररित तुक़ा वन नुक़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युअज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। First and foremost, all praises for Allah subhanahu wa ta'ala, who once again has blessed us with this opportunity to sit in His blessed house and to remember His beloved as well as the beloveds of His beloved sallallahu alayhi wa sallam. Due to the shortness of time, I have exactly 6 minutes in which I am to finish my talk for today. The verse which I recited in front of you, Allah subhanahu wa ta'ala says that those who cause pain or grievances to Allah subhanahu wa ta'ala and the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, la'anahumullah, Allah subhanahu wa ta'ala's curse be upon them, fi dunya, in this world, wal akhirah, and in the hereafter. Allah subhanahu wa ta'ala in this verse tells us that it is not only the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, it is not only Allah subhanahu wa ta'ala, that if we cause pain or grievance to Him, that we will not be forgiven, or that there will be curse upon us. If we cause pain to the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, then surely Allah subhanahu wa ta'ala's curse is upon that person as well. My question, quite simply put to you, is that when Yazid ordered the killing, the martyrdom, the brutality against the family of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, do you think it is fair to say that he caused pain to the Messenger sallallahu alayhi wa sallam? Was the Messenger sallallahu alayhi wa sallam pained when he realized, before he was told that Yazid in the year 60 Hijri will come into power and he will do these cruelties against the family of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam? Do you not think that the Messenger sallallahu alayhi wa sallam was pained by this? Many people, even in this day and age, they lack in speaking the truth when it comes to the character of Yazid. There are no two opinions in regards to the character of Yazid. Yazid, who came into power in the year 60 Hijri, the first thing he did, he removed all the aged and all the elderly ministers, the rulers, the governors, and he replaced them with his relatives, his cousins, who were young, who were arrogant, and in reality who had nothing to do with the religion of Islam. And it is for this reason Imam Ibn Kathir radiyallahu ta'ala anhu in Al-Bidayah wa Nihaya volume 8 page 230, he narrates a hadith from the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, who says that evil and tyrant rulers, they will come into power in the year 60 Hijri. They will waste their prayers, they will obey their desires, and due to their doings Allah subhanahu wa ta'ala will throw them into the fire of hell. This is the hadith which the Prophet sallallahu alayhi wa sallam told us before the time of Yazid. इल्म गैब पे एतराज करने वाले जरा कान खुलकर ये बात भी सुन लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात से पहले बता रहे हैं कि 60 सन हिजरी में एक ऐसा शख्स आएगा, नमाजों की फिक्र उसको ना होगी, हवस का गुलाम होगा, दीन को बर्बाद करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम की आग में फेंकेगा. And the majority of the scholars of hadith have noted that it is Yazid whom the Messenger sallallahu alayhi wa sallam was talking about. In the year 63 Hijri, he attacks the beautiful city of Madinatul Munawwara, killing 10,000 Muslims, 700 companions, and would you believe, the words are difficult to utter. In the masjid, he even raped the women who lived in the vicinity of Madinatul Munawwara. लोग फिर भी एतराज करते हैं कि ये ठीक था या गलत था, जिसने 10,000 मुसलमानों का कत्लेआम किया, 700 सहाबा का कत्लेआम किया. यजीद से फकत हमारा ये वैर और दुश्मनी नहीं है कि वो कातिल अहले बैत है,
बल्कि वो कातिले सिहाबा भी है। और वो जो पाक बीबियां हरम मदीना के इर्द गिर्द रहती थी, उनकी इज्जत लूटता रहा। आज फिर भी लोगों को शक है कि उसको लानती कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। और माजरत के साथ नाम लूं तब भी लोग नाराज होते हैं, ना लूं तब भी लोग नाराज होते हैं। गैर सुन्नी लोग आज भी उसका जिक्र करते हैं और कहते हैं कि दो शहजादों की लड़ाई थी। इट वॉज द बैटल बिटवीन टू प्रिंसेस, देयर इज नो रॉन्ग एंड देयर इज नो राइट। और हत्ता के रशीद इब्न रशीद एक किताब लिखी गई, अ बुक वाज रिटन बाय द टाइटल रशीद इब्न रशीद, और ऑन द टाइटल पेज द ऑथर राइट्स नकल कुफर कुफर ना बाशिद, ही सेज अल्लाहुम्मा सल्ली अला यजीद। He sent salutations upon Yazid, and many confirmations by again non-Sunni scholars have been written upon this book that whatever this author has said, we believe in it, we agree in it. उस किताब में 101 नुकात उसने बयान किए हैं कि सब कसूर अहले फातिमा का था, अहले बैत अतहार का था। उनको क्या जरूरत थी जंग करने की? यजीद को वो अपना पेशवा मान लेते और खून खराबा ना होता। लेकिन हम इस रंग के नहीं है, इस डंग के नहीं है। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत को मानने वाले हैं। और जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत से बुग़्ज़ रखे, दुश्मनी रखे, इनाद रखे, लाख उसकी कुर्सियां हों, जूती के नोक पे उसको हम बिठाते हैं। We have nothing to do with Yazid. Whether it is the likes of Dr. Zakir Naik, अब सुन लो, खुली खुली सुन लो, who sits on TV and he uses the word rahmatullah alayhi for Yazid. He says may Allah's mercy be upon Yazid. We say may Allah's curse be upon Yazid. And many of the scholars who think that religion belongs to their father, दीन किसी के बाप का नहीं है, ना मेरे बाप का ना आपके का। दीन अल्लाह का है, अल्लाह के रसूल का। और जो बात वो करते हैं हम उसकी पाबंद हैं और किसी के पाबंद हम नहीं हैं। We believe from the core depths of our heart that it is due to the love of the family of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that on the day of judgment Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam will smile towards us. It is the love of the messengers of the Sahaba Ikram which we have in the depths of our heart, that when the Prophet sallallahu alaihi wasallam looks at us, he will say that they loved my friends, they loved my companions. This is the reason, this is the only reason our namaz, our hajj, our zakat, we cannot guarantee this, but we have wusuk, we have iman, and we have trust, we have tawakkul in the love of the family of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, as well as the love of the companions. To finalize the speech with one short, very short story. The mimbar, for those of you who don't know what a mimbar is, this mimbar where you sit and you speak, the mimbar of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sitting upon the mimbar, Sayyidina Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu. And for those of you who have the slightest interest in Islamic knowledge, or know the slightest biography of Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu, he was a man of wrath. He was someone not to be messed with. He is sitting on the mimbar doing his speech. Sayyidina Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu at a very, very young age, maybe 9, maybe 10. And he comes to Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu, and with anger and with wrath, as children play with the elders, he says, "Oh Umar, get off this mimbar. ये तेरे नाने का नहीं, ये मेरे नाने का है." वक्त का अमीरुल मोमिनीन हो, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो, 10 साल का बच्चा ये कहे, अगर हमें कोई छोटा बच्चा कुछ कह दे, हमारी क्या हालत हो जाती है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु very calmly leaves the minbar. He picks up the beloved grandson of Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sits back on the minbar and puts him on his lap, and he says to the people, testify and bear witness, ये सच कहता है, उमर के नाने वाने का कोई मिंबर नहीं है, मुझे सब कुछ मिला है तो हुसैन के नाने के सदके में मिला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अहले बैत की मोहब्बत का भी दम भरने की तौफीक अता फरमाए, साथ साथ सहाबा इकराम के भी मुहिब बनने की तौफीक अता फरमाए। And most importantly, as it is important to recognize the friends of Allah subhanahu wa ta'ala, it is just as important to recognize the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala. I'll leave you with this small Punjabi share which someone says, na lamme pende pa mulla, na ilma vich phasa mulla, koi yaar di gal sana mulla, wa akhiru da'waya alhamdulillah.